नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप कैनरा बैंक के भीम यूपीआई एप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, अर्थात इसको एक्टिवेट करके यहां से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कैसे पैसे मंगाना हो तो आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे मंगा भी सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप इसका कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए जानते हैं। Bhim is a mobile app developed by NPCI which allows users to send or receive money. Open Google Play Store on your mobile. Type Bhim and search. Click on Bhim Making India Cashless app. Click on Install. Download process will start. Click on Open. The app in your mobile will open and will prompt you to choose language. Click on Next. Click on Next. Click on Next. Click on Let's Get Started. Click on Allow for giving permissions to the app. Select appropriate SIM as per your choice and click on Next. The app will verify your mobile number by sending SMS automatically. The app will prompt you to enter the passcode. Enter a passcode of your choice and click on the tick mark sign. Re-enter the passcode and click on the tick mark sign. Select the bank where you maintain account and click on Next. The selected bank account will be displayed. Click on your bank account. Now, you need to set UPI PIN to send and receive money. Click on Bank Account. Click on Set UPI PIN. Enter the last 6 digits of your debit card linked to the selected bank account and the validity of the card. Click on the tick mark sign. OTP will be sent to your registered mobile number. Enter the OTP received on your registered mobile number in the first row. Enter a UPI PIN of your choice in the second row. Click on the tick mark sign. Re-enter your new UPI PIN in the second row and click on the tick mark sign. New UPI PIN is set for transactions. Go back to the main menu. You can now send and receive money using Bhim. Canara Bank, together we can. तो जैसा कि अभी आपने देखा, आप इस प्रकार से इसका एक्टिवेशन कर सकते हैं रजिस्टर करके। उसके बाद यहाँ से आप पैसे भी भेज सकते हैं या फिर कैसे पैसे मंगाना हो तो आप पैसे मंगा भी सकते हैं। यदि आपका अकाउंट कैनरा बैंक में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।